Good morning guys, what's up? Welcome back to another video. Today is day 5 of my vlog of my North Bengal trip, and today I have a special surprise for you guys. Just check it out. This is the Jal Dhaka river and this is an international boundary. Whatever you seeing on this side of this river, it belongs to India, while everything over that side belongs to Bhutan. This is the international boundary between Bhutan and India in West Bengal. तो आज का प्लान ऐसा है कि इधर से हम लोग साइट सीइंग के लिए निकलेंगे. दैट इज बिंदु एंड मूर्ति रिवर. आफ्टर बिंदु एंड मूर्ति रिवर वी चेक आउट फ्रॉम द होटल एंड देन वी हैव टू गो टू एनजीपी टू कैच दी ट्रेन. एनजीपी से हम लोग का ट्रेन करीब 8 बजे है. तो हम लोग ये दोनों साइट सीइंग कंप्लीट करेंगे. अपना झलोंग ट्रिप का लास्ट साइट सीइंग बचा हुआ है, बाकी कल हमने कर लिया था. उसके बाद हम लोग एनजीपी जाएंगे और फिर बैक टू कोलकाता. आई होप एवरीथिंग स्टेज विथ लाइक इन दी प्लान. ज़्यादा बारिश हो गया तो प्रॉब्लम हो सकता है. इधर ऐसे ही बहुत ज़्यादा बारिश होता है, कभी भी बादल नीचे आ जाते हैं एंड कभी भी बारिश हो सकता है. तो इट्स लाइक अनप्रेडिक्टेबल ओवर हियर. तो देखते हैं क्या होता है. टिल देन यू गाइज एंजॉय द सिनेमैटिक्स. आई विल सी यू गाइज अप अहेड इन द रोड. यूहू. So dumb, but it's not over. Not very good with decisions. Know what's right, but I don't listen. I don't. So guys, we are en route to Bindu. It's a like hydro power project and dam near Jhalong. It's over Jal Dhaka river, and it's the power plant and the hydro project that like powers and lights the entire area of this Jal Dhaka water site. So we are going to go there and see if we are allowed to enter the dam and see. In the rainy season they generally release water, so I hope the site will be like delightful. Till then enjoy the roads. I will catch you up guys in the Bindu. I want to be daring, baby, dance the night away. I let my hair down if I want. Don't you just get tired chasing fame and being pretty all the time? Doesn't sound like fun. So guys, finally we are at Bindu, and this is the Bindu dam that controls the water of Jal Dhaka river. Right now 2 floodgates are open and the rest of them are closed, like it's rainy season. And this is the Bindu hydro power plant also, and this bridge acts as a connection between India and Bhutan. This entire side is Bhutan. Those houses, those trees, those mountains, everything is in Bhutan, but everything this side belongs to India. Before COVID-19 people can actually go through this bridge without any kind of problem, but अभी कोविड के बाद से देयर इज़ वेरियस प्रॉब्लम. अभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से परमिशन करवाना पड़ता है और भी बहुत कुछ करवाना पड़ता है, तब जाके आप जा सकते हैं इस ब्रिज के थ्रू. वरना पहले आप कभी भी जा सकते थे. भूटानीज पीपल घोड़ा वगैरह लेके भी आया करते थे, बट राइट नाउ इट्स कम्प्लीटली क्लोज्ड एंड कोविड हैज़ प्रीटी मच मेस्ड अप ओवर हियर. दे आर कंट्रोलिंग दिस वाटर. ये पानी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल्ड होता है और जस्ट सी दी फोर्स, इतना फोर्स है अभी बारिश की वजह से. अब ठंडा लाइक विंटर सीजन में आएंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा इधर. इट विल बी सूखा सूखा कम्प्लीटली. I don't fit into your box. Beauty queens without no flaws. You can do better. सो गाइस, वी आर बैक एट दी होटल. अब हम लोग यहाँ से मूर्ति के लिए निकलेंगे एंड देन एनजीपी. एवरीथिंग इज पैक्ड ओवर हियर and we will be checking out very soon. Before that, I want to suggest this homestay if anyone is planning to come to Jhalong, because they are really good. The accommodation they provide, the room they provide, and the food they provide is everything perfect. And the view we have already seen, it's mind blowing. So I will just add the link of the homestay, and the name is RJ Homestay. You can check it out. And one more personal suggestion from my side. If you are planning to come to Jhalong, then try in monsoon. In winters there are multiple places that is like Jhalong with a like slow flowing river and some minor water dam, but in monsoon it is at its best condition. It's one of a experience, one of a kind that won't be for like you will be finding in any part of India maybe. So you should check the like Jhalong videos of the monsoon and come here in monsoon. Then also check the homestay link and come here, enjoy. I will see you guys up ahead in the road. Till then, enjoy the cinematics. Yoo-hoo! Coffee cup
lollipops and cigarettes laying around the room. I don't mind a little mess, just wanna stay with you, and we'll do anything that we want today. Won't be scared of falling down no more, so take me away. So guys, right now we are at Murti, and this is the Murti bridge. This is the area under Gorumara National Park. From the start of that bridge, Gorumara National Park starts, and this side is the Gorumara National Park up to 15 kilometers. The actual entrance of the national park is starting. यहाँ से area start हो रहा है, and this is the Murti river. This is actually a picnic spot. आप अगर पिकनिक के लिए आ रहे हैं तो आप आ सकते हैं, नहीं तो you can just take some cool pics over here. And this is not a glacier river, this is a complete monsoon river जो monsoon में ही सिर्फ रहता है. And that side is न्यू जलपाईगुड़ी. न्यू जलपाईगुड़ी उधर है, हम लोग अभी उधर ही जाएंगे आफ्टर टेकिंग फ्यू मोर क्लिक्स एंड सिनेमैटिक शॉट्स. आप सबसे आगे रोड में मिलते हैं. और एक जगह भी जाना है जो नाम है गाजुल डोंगा, वो एक डैम है. फिर हम लोग जलपाईगुड़ी के लिए निकलेंगे. सी या. Nothing really matters if you're not mine, right here, right now. And even if the world ends, then I'll be fine. No fear, no doubt. I know a place that sneak away. Leave the pain, I'll stay with you. Let me hold you, close your eyes. We'll be reaching paradise. Guys, we are finally at Gazoldonga Dam. That is the flood control gate over Tista River by West Bengal Irrigation Corporation. And here it is the Gazoldonga Dam. It has 38 floodgates and it controls the flow of Tista River that flows into Gangtok and other parts of Sikkim. The motive of this dam is to control it throughout the winter and monsoon. So this is Gazoldonga Dam. It is like 30 kilometers from New Jalpaiguri, and you guys can also come here. I will just add the link in the description box. You guys can check it is not a famous part of this tour, but it is quite known in North Bengal. So from here we guys are going to head to the New Jalpaiguri. We have train at like 6 PM in the evening. Till then we will wait in the station. I will catch you guys once we board the train. Till then, bye, see ya. I don't even really know your name, but I'm still high on all love and making me feel alright. I don't even really know your name, but I'm still high on all love and making me feel alright. Yeah, I'm still high on all love and making me feel alright. So guys, finally we are in the NGP station, but our train is some time late, so we have to wait it here out at least 1 more hour. Till then we are going to have our dinner and wait for the train. I will see you guys up in the train. Till then, enjoy some shots from the station. I don't even really know your name, but I'm still high on all love and making me feel alright. Heavy like a feather, you mend my heart right here, right now. I didn't even notice your medicine, no fear, no doubt. So guys, we have finally board the train. ट्रेन का नाम पदातिक है, जो शियालदा तक जाएगा. न्यू अलीपुरद्वार से आता है. And the train is around 30 minutes late, but no problem. उससे प्रॉब्लम नहीं होगा. And I'm thinking to end this vlog right here, right now. बहुत थक गया हूँ, 5 दिन से ब्लॉग कर रहा हूँ. ये पहला मेरा फुल ब्लॉगिंग ट्रिप रहा है. सो प्लीज़ बताइए कैसा लगा, क्या क्या चेंजेस कर सकता हूँ. फ्रॉम दी नेक्स्ट ट्रिप ड्रोन विल बी ऑन बोर्ड. मैं कल ही जाके ड्रोन का ऑर्डर देने वाला हूँ. सो वो तो रहेगा ही नेक्स्ट ट्रिप से. सब कुछ नया होगा. आई विल बी ट्राइंग टू इम्प्रूव. सो बताइए कैसा लगा. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. इस साल के एंड तक मेरे को 1000 सब्सक्राइबर जाना है. तो दैट्स द गोल. सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब, दैट्स द गोल ऑफ द डे. एंड लाइक शेयर तो ज़रूर कीजिए. मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ट्रिप में, जो कि शायद केदारकांत हो सकता है या संदाकफू हो सकता है. 2 प्लान इज़ ऑन गोइंग. इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, मेरे को पता चल जाएगा कौन सा वाला होने वाला है.
Till then, bye, see ya, good night, take care. Yoo-hoo.